वेलकम टू ब्यूटी बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम आए हैं बैंगलोर बसवेश्वर नगर तक्षशिला हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी और ये नवीन जी हैं जो यहाँ के ट्रेनर हैं और ओनर भी हैं। आज हम इनसे मिलेंगे और सीखेंगे कुछ हेयर के बारे में और पूछेंगे कुछ एक नया स्टाइल सिखाने के लिए हम लोगों के लिए। नवीन जी, आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजिएंट लेंथ हेयर कट। सो ये हेयर कट आके आपको बहुत यूनिक होता है। सो ये हेयर कट का बारे में बोलने के पहले आई कैन टेल यू दैट लाइक हेयर टेक्सचर का बारे में बताना चाहता हूँ। सी वी हैव 4 टाइप्स ऑफ हेयर टेक्सचर। स्ट्रेट होता है, नेचुरल स्ट्रेट होता है, वेवी होता है, कर्ली होता है और किंकी होता है। सो ये हेयर कट आके आपको नंबर 2 टाइप 2 ऑफ द वेवी टेक्सचर का हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो जैसे ये जो आप जो हेयर कट हमको दिखाने वाले हैं ये टाइप को हेयर बेबी हेयर के लिए मैच होता है। स्ट्रेट हेयर के लिए सेट नहीं होगा, कर्ली के लिए सेट नहीं होता है। तो स्ट्रेट तो वेवी मतलब नेचुरल जो स्ट्रेट है ना वहां से वेवी तक कर सकते, मतलब इसका हिसाब। सो वी विल नॉट गो बिहाइंड द वेवी। तो इस हेयर कट को क्या यूनिक बनाता है? यूनिक मतलब दिस मेंटेन द लेंथ एंड गिव अ मिनिमम लेयर्स एंड फ्रिक्शन ऑन द हेयर, मतलब अच्छा मूवमेंट आता है। तो लाइक इस हेयर कट के लिए मींस लाइक वॉल्यूम कैसा चाहिए? लाइक फुल वॉल्यूम चाहिए या एनी काइंड ऑफ अ वॉल्यूम? किसी वॉल्यूम चाहिए, ओनली फोकस ऑन द टाइप ऑफ थिंग। मतलब ये हेयर पे हम लोगों को एग्जैक्ट रिजल्ट इसका अच्छा रहेगा। यस यस। तो चलिए नवीन जी चलते हैं और हेयर कट सीखते हैं आपसे। हेलो गाइस, आज का दिन हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट लेंथ का हेयर कट। दिस इज वन ऑफ द यूनिक हेयर कट वेयर वी कैन सी ओनली ऑन द प्रोफेशनल सैलून्स। सो जो हेयर कट बता रहा हूँ मैंने ट्रांजिएंट लेंथ का, सो ये जो चीज ना सबको इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा क्योंकि ये हेयर कट आके ना थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। सो ट्विस्ट कैसा रहेगा कि मतलब आज देखेंगे। सो एज ऑल नो कंसल्टेशन प्रॉपरली हम लोग करना है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट का जो चाहिए हम लोग आउटपुट देने के लिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग आइडियल लेंथ एंड आइडियल टेक्सचर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने हेयर कट कंप्लीट करने के लिए। सो फर्स्ट आइडियल लेंथ में क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट वी हैव टू चेक ओनली ऑन अ लॉन्ग, मतलब क्लाइंट का जो बाल लॉन्ग रहेगा ना, सो उसका बाल पे हम लोग ये ट्रांजिएंट लेंथ का हेयर कट करना ही पड़ता है। सेकेंड थिंग आइडियल टेक्सचर। आइडियल टेक्सचर हर आइडियल टेक्सचर पे नहीं कर सकते, मतलब ओनली ऑन ए स्ट्रेट टू वेवी, मतलब केमिकल स्ट्रेट पे सजेस्ट मत करना। मतलब यू कैन डू इट फॉर ए नेचुरल स्ट्रेट और नेचुरल वेवी, इतना भी वेवी चलेगा, बट स्टिल ट्राई टू गेट ऑन ए स्ट्रेट टू वेवी मीडियम हेयर। गॉट इट? सो सेकेंड थिंग पार्टीशन। फर्स्ट कमिंग टू द हेयर कट पार्ट, हम लोग 3 क्रिएशन किया है कि पार्टीशन, एलिवेशन, कटिंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट योर पार्टीशन। सो पार्टीशन में क्या होता है कि फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए वन लेंथ। जब बाल पे ज्यादा से ज्यादा लंबा है, जब लंबा रहेगा एकदम वन लेंथ क्रिएट करो, नहीं तो यू कैन स्टार्ट डूइंग योर हेयर कट प्रॉपरली। सो क्रिएटिंग ए प्रोफाइल सेक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल बैकवर्ड, जो आपका डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ए डायगोनल बैकवर्ड। एंड यूजिंग द सेम सेक्शन वी हैव टू यूज ए डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन इन दी फ्रंट। आपको देख सकते हैं यहाँ मुझे डायगोनल बैकवर्ड भी है, डायगोनल फॉरवर्ड भी है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सो फर्स्ट वी विल डू अ वन लेंथ इन द डायगोनल बैकवर्ड। सो आफ्टर डूइंग अ वन लेंथ यूजिंग द सेम डायगोनल बैकवर्ड, सो वी विल क्रिएट अ पिवोट सेक्शंस ऑन द डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। पिवोट सेक्शन होने के बाद वी विल लिफ्ट द हेयर इनटू द ओवर डायरेक्ट। क्या है? ओवर डायरेक्टेड, दैट इज योर 180 डिग्री। ओके, सो ओवर डायरेक्ट होने के बाद यूजिंग ए कॉनकेव होल्डिंग। व्हाट इज दिस? कॉनकेव होल्डिंग। कॉनकेव होल्डिंग के साथ वी विल डू अ ओवर डायरेक्ट बैकवर्ड। आफ्टर डूइंग दिस विथ यूजिंग अ ट्रैवलिंग गाइडलाइन, so as you see in the elevation I have written 90 degree to over directed traveling guideline and stationary guideline concave holding। so elevation पे इतना सारा हम लोग यूज करना है। so but after doing with the traveling guideline what I suggest,
So take one small inch of the hair in between of the diagonal forward and the diagonal backward. So take a section from the crown point. So create one stationary guideline on the top of the crown. So after creating a stationary guideline, so split it into the three part. मतलब उनको क्या करना है कि सो जो सेक्शन हम लोग ने स्टेशनरी गाइड पे लिया है ना, सो इसको हमको क्या करना है, सो वी हैव टू स्प्लिट इनटू द थ्री पार्ट्स. So on the side diagonals and the front diagonal forward. So using that same guideline, concave, okay, all the side from the three sides using a concave, using a stationary guideline, we have to cut it concave cutting. So when it comes to the cutting technique, club cut or a square cut or a point cut. So usually initial stage when we are start learning, so we should always use a club cut or a square cut to complete the haircut. So after your haircut with the blow dry, so start doing a texturizing to give a good output. The styling of the blow haircut is in-curls or out-curls. Got it? So we'll see the live practical now. So then you can start doing in your dummy heads.
ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಟ್ ಹೇರ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಯೋರ್ ವಾಶ್, so always put a heat protection. Use a trolley. So as I explained in the theory, now theory explain madiro prakara. So first we have to start with the profile section because the client has already long hair. Alva? So long hair iddaga ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? So one length ಮಾಡಲ್ಲ. Directly we gonna start with the sectioning. So first we are with the profile section. Got it? So which haircut we are doing today? Please louder. Transient length. Yes. So for doing a transient length, first do a proper consultation. What is the ideal length? Long. Right? So take a section exactly on the crown point and till back of the ear. लोग क्या करना है, पहले we have वॉश करना है. वॉश करने के बाद डिटैंगल करना है. डिटैंगल करने के बाद what we have to do is heat protection. Heat protection के बाद start doing your sectioning. So exactly crown point in the back of the ear ವರೆಗೂ first section ಬರಬೇಕು. Make sure client hair should be properly moisture unless you finish your haircut. So this is my first section, right? So coming forward in the front, so always leave a gap of the half an inch from the crown where we will create a stationary guideline. So exactly end of the eyebrows. Divide a section into the end of the eyebrows. So again come to the other side. Take a proper section. End of the eyebrows. So make sure you will be isolating this section very proper way. Alright, so come back. Isolate this section. Very tightly.
the right way. Now again, come back. This will the section. Got it? So you can see the section. See, transient length ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಿಕಿ ಹೇರ್ ಕಟ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ, लोग क्या करता कि so first we will focus on the sectioning because this is the one of the unique haircut ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ told you, first is my diagonal backward, diagonal sides and diagonal forward sections. So the entire haircut will be done on the concave technique. So as the client decided, first we have to start with the one length where my guideline will be created. So in the diagonal backward section, first what I'm gonna do is I'll be taking 1 inch subsection, 1 inch subsection तगोंडु फर्स्ट लेंथ ना कट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. मुझे क्या चाहिए according to the client, what I'll do is I'll do a one length. So before cutting, please make sure with the client. Okay, the client is ready to cut down approximately to 1.5 inch. Got it? So with the 0 degree, got it? Cut it square. Now what haircut technique I am using? कौन से haircut technique use करा मैंने? This is club cut. Which cut? Club cut with the 0 degree. So properly take a very few sections and cut it with the club cut. Same continue with the same guideline. So हम लोग अभी 0 डिग्री पे वन लेंथ कट कर चुका है. Now we will divide into the two part. Again coming back, same with the crown point, I'll be dividing into the two pivot sections. ಯಾವ sections divide ಮಾಡಬೇಕು? Pivot sections. So as I already told it, this haircut is very unique haircut. तो unique haircut में हम लोग very patiently you have to do it. See, I have divided into the pivot sections. So again take it over directed, over directed. Holding is my concave. Make sure your sections are very tight. So the guideline which is done on a 0 degree is your traveling guideline. So holding concave, cut it. So using the same guideline, what we will do is again we will complete full on full the haircut. Yes, over directed. So using the
one length guideline. So I'm gonna cut concave. With all pivot sections. So you can see the layers from the back. Yeah, because we are not cutting any more a length. Using the same guideline, taking a pivot sections, what will I do is straight lines. So make sure your client head shape should be always. Using same guideline, I'm cutting concave. मेक श्योर आप लोगों ने अच्छे से रूट से कोम करना है और होल्डिंग भी टाइट करना है. जब होल्डिंग टाइट होगा आपका हेयर कट प्रॉपर होता है. अगर होल्डिंग लूज हो गया आपका हेयर कट भी इनप्रॉपर होता है. सो वी आर डन ऑन द डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन. नाउ आप लोगों को पहले बोलो जैसे, so we have to create a stationary guideline. Where will you create a stationary guideline? On this point. Got it? So this is my stationary guideline. So which I'm gonna create on the crown point. So previously ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್. So how you create according to the client requirement ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is my stationary guideline. So I'll take little bit from the all three sections. ನಾನು ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು I'm gonna cut it straight. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ½ ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. So using this same guideline ನಾನು split ಮಾಡ್ತೀನಿ guideline. Okay, so then first I'm gonna do it on the right. So to doing a right, what we will do is, so remove the side diagonal sections and take a diagonal one more section. Diagonal pivot sections. So stand front of the section. So always stand front of the section. So already ನಾವು guide create ಮಾಡಿರೋದು we have already having here, right? So ನಾನು stationary guideline cut ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, so मुझे अभी क्या करना है, तो using that my stationary guideline I am gonna cut concave. See, I have my guideline here, so I'm gonna cut concave. So you guys have any doubts ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? किसी को डाउट्स है? Okay, so using the same guideline, what we will do is again straight please.
So I'm standing, and the standing position is also very important. तो haircuts करने के लिए क्या चाहिए? गाइडलाइन important होता है, sectioning important होता है, और ideal length, ideal texture is very important. So I am done on this side. So what we will do is like we will come to the other side, right? So when it comes to this section, steady Agnitko. Oh. So again, take a diagonal section. So stand behind this section. So already taken a stationary guideline here. I have my guideline here. Cut it, concave. Easy है क्या हेयर कट? Using the same guideline. Okay, so we are done with the all three sides of my haircut. Now coming to the front, so always stand on the right side. Make sure you will be using the same stationary guideline. So create one small box section. Since the client has already shot in the front, I don't think so we will match my guideline because it's already short. See, I'm getting very little. So using the same stationary guideline, I'll be dividing the two parts. So first what I do is like so again in the front using the same stationary guideline. Now, so after creating your entire haircut, we should not, हम लोग ने क्लाइंट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. So in the front we have to take a forward graduation sections, especially for a transient length. So take a radial section, just blend it because the client has already shot in the front. If suppose the client has a longer hair, long idrunu ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೇಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಲುಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. Got it? So what will I do is like I'll balance her previous length to create a forward graduation by using a point technique. Just a blending.
just a blending. See, I'm doing just a blending with a pointing technique. Okay, so now what we will do is like we have to do a styling. Styling compulsory ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? So in-curls or out-curls. Why in-curls and the out-curls? Because we have to show the movement of the layering. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೇಯರಿಂಗು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Got it? So now we will start doing a blow dry. Bobby, we will start doing our blow dry. With a full heat and a full speed, they have to do the proper blow dry. Now, we'll be doing a proper frizz-free blow dry. So rotate nicely on the ends.
So last section of the blow dry. ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ So this is how the haircut looks. So this is how the output will be seen. So you can see the blunty of the layers with the not reducing the length. You can see the length is maintained according to the client requirement. I hope client has liked this haircut.